Hello students, the question is refer to the circuit diagram given in the figure. Which of the following observation are correct? Statement 1. Total resistance of the circuit is 6 ohms. Statement B. Current in ammeter is 1 ampere. Statement C. Potential across AB is 4 volts. Statement D. Potential across CD is 4 volts. Statement E. Total resistance of the circuit is 8 ohms. Choose the correct answer from the options given below. Option 1 A, B and D only. Option 2 A, C and D only. Option 3 B, C and E only. Option 4 A, B and C only. So the problem is based on some basic concepts of solving circuits. There is a diode also in this particular circuit, and nothing is mentioned about the nature of the diode, whether it is a ideal or practical diode. Since no data is given for the diode, like the resistance of the diode or the threshold voltage of the diode, so we assume the diode to be ideal. So without assuming it to be ideal, the problem cannot be solved. So first of all, we have to assume the diode to be ideal diode. And we know that the ideal diode, it becomes a short circuit for forward bias and open circuit for the reverse bias. Now you can easily see that this is a positive terminal of the battery. So this positive goes at the anode side of the diode and the negative goes to the cathode side of the diode. So it means that this diode is in the forward bias, and in forward bias it means that this is the short circuit. Short circuit means it is replaced by a wire. So the situation is very simple now. Now in this particular circuit there is this resistor and these two resistors are in parallel because this diode is a short circuit here. Now let us analyze these statements one by one. So first of all, the total resistance of the circuit is 6 ohms. Let us verify it. First of all, these two resistances are in parallel, and when the resistances are in parallel, we can straight away calculate their equivalent. R equivalent equals to R1 R2 upon R1 plus R2. Yeah, it means that 4 into 4 upon 4 plus 4, which comes out to be 2 ohms. So the parallel combination of this is 2 ohms. Now this parallel combination, when replaced by 2 ohms, this 2 ohms, this whole 2 ohm becomes series with this 4 ohm. And 2 plus 4 is 6. It means that the total resistance is 6. So the total resistance RT is equal to 4 ohm plus 2 ohms, which comes out to be 6 ohms. So we can say that this statement is correct. The total resistance of the circuit is 6 ohms. This is the correct statement. Now let us calculate the current in the ammeter. Now this ammeter is showing some deflection because a current is flowing in it. Now since we have calculated this parallel combination as 2 ohms and this is 4 ohm, so the circuit can be replaced in a simplified manner like this. Now this is 6 volts battery and the total overall resistance is 6 ohms, and here is the ammeter. Now it is very simple to calculate the current. The current is the total voltage, which is 6, divided by the total resistance, which is 6 ohms. So 6 volts upon 6 ohms comes out to be 1 ampere. So the current in this ammeter, basically it is 1 ampere. So this statement is also a correct statement. Now let us see what is the potential difference across the AB section of the wire. Now this AB section is in parallel with this DB section. These two are parallel, and in parallel is the voltage is same. So the situation is this is a equivalent 2 ohms. So the situation is like this. This is a battery having 6 volts. Now here is the ammeter. Now here is 4 ohm resistor. Now here this equivalent combination is of 2 ohms. So these two terminals, these are at the same potential, D and A are at the same potential because the diode is short circuited. So here is 2 ohms and we have to find out the voltage across this 2 ohms. Now it is very easy to calculate. The current flowing in the circuit is 1 ampere. So a 1 ampere current is in the total equivalent 2 ohm combination. So 1 ampere multiplied by 2 ohm, according to Ohm's law, the voltage across this parallel combination is V equals to IR, which is 1 ampere into 2 ohms, which comes out to be 2 volts. So the voltage across AB is 2 volts, not 4 volts. So this is a wrong statement.
Now potential across CD is 4 volts. Now this is a correct statement because the current flowing here is 1 ampere, and when 1 ampere current flows through 4 ohm resistor according to Ohm's law, V equals to IR, it means that 1 into 4, which comes out to be 4 volts. So this is the correct statement. D is the correct statement. Now E, total resistance of the circuit is 8 ohms. So this is a wrong statement. We have already calculated the resistance as 6 ohms. So this is totally wrong statement. So in this way we can say that option A, option B, and the statement A, statement B, and statement D, these are the correct statements. These are valid statements, and according to it we can say that option 1 is correct, that A, B, D, these statements are correct, these observations are correct. So this is the answer, option 1, that is A, B, D, these statements, these observations. तो यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें रेजिस्टर्स लगे हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, एक रेजिस्टर फिर सीरीज में है, और एक बैटरी दी गई है, साथ के साथ एक डायोड दिया गया है। डायोड के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि आइडियल है, प्रैक्टिकल डायोड है। प्रैक्टिकल डायोड अगर हम अज्यूम करते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा गिवन होता उसका, लाइक उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसकी रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे हमें डायोड को आइडियल मानते हुए चलना है। और आइडियल डायोड की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट मीन्स एक वायर से रिप्लेस हो जाएगा वो, और उसमें पूरी करंट फ्लो करेगी। तो डी और ए जो है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे जब एक वायर से रिप्लेस होगा, तो उस केस में ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में आ जाएंगे। एक एक करके हमने स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की निकाली। सबसे पहले 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला जो कि 2 ओम्स आता है। 2 ओम रेजिस्टर जब हमारा इक्विवेलेंट आया उसको हमने 4 ओम के सीरीज में ले लिया, तो 2 और 4 सीरीज में जोड़ के हो जाएंगे 6 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इस पूरे सर्किट की हो जाएगी 6 ओम्स, जो कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ए ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। फिर उसके बाद करंट निकालने की अगर हम बात करें तो करंट के लिए टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस करके हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट आएगी 6 वोल्ट्स अपॉन 6 ओम्स, जो कि 1 एम्पियर होगी। तो ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। सी स्टेटमेंट में कहा गया है पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज 4 वोल्ट्स। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ए बी और डी बी ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस हैं, इक्विवेलेंट 2 ओम्स है, और इस इक्विवेलेंट 2 ओम्स के थ्रू जो करंट पास हो रही है वो कितनी, टोटल जो करंट पास हो रही है बेसिकली वो कितनी पास हो रही है, वो पास हो रही है आपकी 1 एम्पियर, जिससे कि ये वोल्टेज हमारा आ जाता है 2 वोल्ट्स। इसको दूसरे तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, केसीएल से भी कर सकते हैं आप। अगर ये 1 एम्पियर की करंट आ रही है तो डी नोड पे, या डी और एक कॉमन नोड बन गए, इस पे आके ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं। तो यहाँ पे दोनों पाथ्स में 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अब अगर आप 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपको स्ट्रेट अवे इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा 2 वोल्ट्स। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिंगल ब्रांच में आप अलग से भी वोल्टेज देखेंगे तो वो 2 वोल्ट ही आएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, सी जो ऑब्जर्वेशन है हमारी। डी ऑब्जर्वेशन में कहा गया है कि पोटेंशियल अक्रॉस सी डी इज 4 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट्स है। डेफिनेटली ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 4 ओम के रेजिस्टर में, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ 1 इंटू 4 यानी 4 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस, सी डी के अक्रॉस वोल्टेज आ जाता है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी जो है वो 4 वोल्ट्स है। ई स्टेटमेंट में कहा गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम्स, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इसकी 6 ओम्स है, तो इस तरह से एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो कुल मिला के ए, बी और डी ये तीनों ऑब्जर्वेशंस या स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।